Walaikum assalam. Yes, this is completed. This was your homework, and I hope you all have completed this. We are going to start the next page, page number 207 in our activity book. Yes. Now the first question is we have to find complete the equivalent fractions 207. 207 activity book. Okay, the first question is yes, who is going to answer the question? जी अच्छा यस सर जी बोले बोले बेटा 2 very good. Okay, now we have to express as decimal. Okay, 2 over 10 is equal to in decimal 0.2. Now the next is Abdul Wasi. Yes. What do we write here in the blank part B? 6. We are going to write 6 here. And in the decimal 0.6. Very good. Okay, now good, very good. Now Arshman, part C. What we will write here? Page 207, activity book. कैसे पता नहीं था जी। अर्शमान आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है आवाज़, नहीं आ रही आवाज़। टू कैसे आएगा, आप कैसे बोल रहे हैं टू यहाँ पे? फोर से पहले देखिए कि 100 कितने टाइम्स आ रहा है। फोर फोर व्हाट्स द 100? फोर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? जी अर्शमान बता रहे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं उस्मान? आप थोड़ा सब्र से काम लिया करें आप। जी अर्शमान आवाज़ नहीं आ रही है अर्शमान की। चले उस्मान बता दें, उस्मान बता दें चले। 4 मल्टीप्लाई बाई 2500 होता है, तो न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाई 25, so we have the answer 25. चले अर्शमान, अर्शमान उस्मान मैं तुम्हें बाहर भेज देता हूँ, सब्र बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर। अर्शमान इसको बताओ पॉइंट में डेसिमल में क्या लिखेंगे 25 और 100 को? यस, व्हाट वी विल राइट इट इन डेसिमल? 0.25। गुड, ठीक है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अहमद अकरम। अहमद अकरम, अहमद अकरम, अनम्यूट योरसेल्फ अहमद अकरम। चले इस पे बताएं, यहाँ पर ये बॉक्स में क्या आएगा इधर इस जगह पर? यस, क्या आना चाहिए यहाँ पे? 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
then the denominator is 100. Subs- no, Ayan, no, नो नेवर, मैं खुद पूछूंगा, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है। अहमद अकरम ये बताएं कि 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर को, कि 100 आएगा। जी। अहमद अकरम, अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, अहमद अकरम बताएं 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा। जी, अभी भी हमने किया था, ये देखो यहाँ पर भी तो किया था, आपने देखा नहीं, कि आपकी तवज्जो नहीं है बिल्कुल भी। देखो अब लास्ट वाला नंबर क्वेश्चन देखो, 4 से 100 किस तरह आ रहे हैं, इक्विवेलेंट 25 से ना। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 बाय 25, सो वी हैव 100। सो ऊपर 3 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से करेंगे, 25 से। तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स 25 कितना होता है। 25 का टेबल तो आपको आता होगा ना, इतना आसान टेबल है। इतना टाइम लगा रहे हैं आप। 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75, सिंपल है बिल्कुल। आपकी पूरी तवज्जो नहीं हो रही है बेटा, और नीचे 100 है। ठीक है, सो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देन एक्सप्रेस देम एज डेसिमल्स। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली है हमने डिनोमिनेटर 100 के साथ। तो अब ये हंड्रेड्स का नंबर बन गया है, तो अब इसकी डेसिमल में क्या लिखेंगे, यस, 75 और 100 को डेसिमल में क्या लिखेंगे अहमद अकरम। 0475, वेरी गुड, शाबाश, आपने सही बताया। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हियर बॉयज, all of you listen very carefully. The question number 4 is, draw a ring around each fraction that is equivalent to 0.8. We have to draw a ring around the fractions given below that are equivalent to 0.8. Equivalent to 0.8. We know that zero point 0.8 is in fraction. 0.8 is 8 over 10. वो लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। Yes. So this is 8 over 10. So equivalent fraction of 8 over 10 is it equivalent 80 over 100? Okay. Then 8 over 10 multiplied by 10. So 8 tens are 80 and 3 tens are 100. And the equivalent fraction is same, that is 8 over 10 here. Okay, these two are the answers of this question. Okay. Now I'm asking the answer for question number 5. Yes, I can. Shaman is raising hand. Abdul Wasi is raising hand. Okay, I am going to unmute Ashman. Yes. Okay. Many students are raising hand, but I can take only one at a time.
so that there should be no noise. Yes, Arshman, इसमें क्या करेंगे हम? How can we do it? Yes. Draw. ये समझ आ गया आपको 4 वाला? 5 में क्या करेंगे? Yes. What we will do in 5? What the draw ring around each fraction that is equivalent to 0.60. Yes. जी. 60/100 हो जाएगा एक और 6/10. Very good. That's just these two fractions are the somebody is. Yes, Abdul Was is chatting. Yes सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही समझ नहीं आ रहा ओके ओके दोबारा देखें यहाँ पर बेटा ये अब मैंने यहाँ पे ये दोबारा समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ अ रिंग अराउंड ईच फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.6 0.6 is equal to either 60/100 because there are two digits after the decimals and if we divide both by 10 so we have 6/10 this is also an equivalent fraction this is also the equivalent fraction so the equivalent fractions are 6/10 and 60/100 so we drew ring to the fraction 6/10 and 60/100 okay ठीक है समझ आ गया अब्दुल वासे आपको okay now I'm taking the next question I'm going to explain the next question. Draw a ring around each fraction or decimal that is smaller than 1/4. That is smaller than 1/4. So look here, 1/4 is here, and the smaller draw a ring around each fraction or decimal that is smaller than 1. So the numbers which are at the left hand side are smaller. So look here, these four fractions where we compare it here so 1/10 is smaller 2/10 is not there but 0.2 is there this is smaller and 0.1 that is also 1/10 so this is smaller all other fractions are greater all other fractions are greater 0.9 is greater 3/5 3/5 will be if we multiply it by 2 so this is 6/10 and 6/10 is greater. Clear? So its answers are 1/10 and 0.2. I am going to allow all of you to unmute if there is any problem with the students. Yes, everybody is cleared. सबको ये समझ आ गया पेज पूरा? Okay, now come to so this chapter is now completed. We will not going to do page number 208. I just look the activity the pupils book here which we have not completed so in the pupils book 207 is completed 207 is completed yesterday oh the chapter is completed now so the new chapter we will start is mixed numbers the new chapter is mixed numbers we start it from the pupils book okay I just write for a fraction completed in activity pupils book today this is CW and we have started the new chapter mixed numbers just I tell you the mixed numbers what are mixed numbers look here whenever we write
a fraction like 2 over 3 and a whole number like 5. So these both numbers makes a mixed number. This is a whole number and this 2 over 3 is a proper fraction. We call it proper fraction. The proper fraction is that whose numerator is smaller than the denominator. Clear? I think you can see it clearly. Whenever a whole number and a proper fraction is joined and written, so this is called the mixed number. This is called the mixed number. And how it is, look here, for example, one whole figure is shaded, so we write one whole, and 1 of 4 is shaded, so 1 over 4. This is called the mixed number. These figures can be written as a mixed number as 1 whole and 1 over 4. Clear? Just like this, we have an activity, we have an exercise on page 211. All of you open page 211 in pupils book. Okay, page 211, 211. Everybody has opened. So yes, who will tell? Usman Khalid is going to tell the answer. Ayan, okay, Ayan is telling. Okay, Ayan is telling. All boys follow the rules. I don't want to mute all of you, but you just, whenever I ask, then you unmute yourself. Okay, Ayan is telling. How many holes are there, Ayan? Three holes are there. And the fraction, look here, fifths. So it's in the form. So again, 3/5 are there. Whenever this is written 3/5, so this is called 3 over 5. Okay, in words we can write it 3/5. Okay, in the next line we write 3 here, and in the fraction we write 3 over 5 here. Okay, and when we join it, so it will become 3 whole 3 over 5. Now I hope you all are clear now. Okay, now the next I will ask from Ahmed Akram. Okay, Ahmed Akram बताएंगे. जी, यहाँ पर इसका क्या बनेगा अहमद अकरम? What mixed numbers do the shaded parts show? One whole, very good. 2 over 4, okay? 2 over 4. One whole, 2 over 4, very good. Okay, now I'm taking Usman Khalid for the second question. Yes, Usman is very quick. One whole, 2 over 2 over 6. 2 are shaded ना? 2 shaded है यहाँ पर. ठीक है? 2 over 6 हो जाएगा. Okay, now I'm taking Umar. This is Umar Arshad. This is Umar Arshad or any other? उमर आप कहाँ हैं? आप कितनी देर से आए आप? इसका क्या होगा बताओ इसका आंसर. यस उमर, समझ आ रहे हैं आपको? जी, 7/5 5/7. और क्योंकि ये दोनों शेडेड है पूरी, तो इधर क्या आ जाएगा? 2 होल्स. ठीक है, 2 whole figures are shaded and 5 out of 7 parts are shaded. So its answer will be 2 whole 5/7. Okay, now I'm taking uh, Abdul Wase for the last question. Yes, Abdul Wase. Umar, you mute yourself.
यस, टू होल, एक मिनट, टू टू ओवर फोर आर देयर, टू शेड इट आउट ऑफ फोर, ओके, 1 मिनट। इन छः को टोटल करें आप, 6 से डिवाइड करते हैं, बस ये इसका 23 लिख दो। यस, okay boys, this page is completed. Move to the next page, boys. This is very easy and interesting page, and I hope question 3 will you will do it in homework. Okay, this is not difficult, this is very easy. Question number 3 is very easy. Question 4 I will do, we will do question 4 here. Okay, question 4 is our CW. Now in question number 4, page 212, shade, shade the sets of shapes to show the given parts. What makes numbers do the shaded parts show? Now look here, every figure is divided in 1 over 4. In this circle, there are 4 partitions, and one partition is called 1 over 4, or we call it quarter. One part is called quarter. So we have to shade 15 quarters. So there are 4 quarters, 4 quarters, 4 quarters, 4 times 3, 12, and 13, 14, 15. So 3 parts in the last figure will be shaded, and all the 3 figures will be fully shaded. Okay, mute yourself. There is a noise behind someone. Mute yourself. So look here. Again, I am telling you there are 15 quarters to be shaded. So one part is called 1 quarter. अहमद अकरम की आ रही है ना, ये सीटियाँ बजा रहे हैं, ये पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, क्लास में भी सीटियाँ बजाते रहते हैं। ओके, सो जी, होल में क्या लिखेंगे अयान अली बताएं। जैसे हमने शेड कर लिया है, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट मिक्स नंबर क्या आएगा यहाँ पे। जी, 3 होल, 3 होल है, और 3/4 ये आएगा इसका। ठीक है, अब आप गौर से देखिए यहाँ पर कि इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है 26 सिक्स। नहीं नहीं, एवरेज दे रहा है उसका, एवरेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमें ये करना है कि 26 सिक्स करने हैं। एक फिगर में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ये किसके शोर आ रहा है इतना ज़्यादा, यार म्यूट करो अपने आप को। तो एक फिगर में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सिक्स, सिक्स का मतलब क्या होता है, 1/6, ठीक है। सिक्स का मतलब, सिक्स मीन्स 1/6। So look here, we will wait 3 partitions, and now it 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now there are 6 partitions in each figure. So we make partitions like this in each figure. So in each figure we have made the 6 parts, and one part is 1/6. So 26 we have to shade. So there are 6 parts, 6, 6, 6. 6 4 the 24. These whole figures will be shaded. 4 whole figures will be shaded. And the last figure we will shed how many? 2 will be shaded. Yes, who will tell me the answer in the whole numbers? Arshman, can you tell me what mixed number we will write like this?
as we have written 3 over 4 here. So what mixed number we will write here? Yes. Anybody can tell? Time is over now. Yes. 4 whole. 1, 2, 3, 4 whole. And 9. अब्दुल वासे बताएं. 2 over 6 होगा ना. ये तो टोटल तो 6 है ना. टोटल 6 है ये. और अगर आप इसको 3 लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा? 4 होल 1 over 3. 3 में से 1 शेरिड है, तो ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है. ठीक है, ये दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल है. अगर आप 3 लेते हो यहाँ पर तो 1/3 हो जाएगा, जैसे जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/6 की. So though both are equal. Okay. In the next class, we will learn the other other topic. We will learn the topic in the now. What you will do in your homework? I'm just writing the homework here. Your homework is in the activity book. You will do page number. So much noise coming from Ayan Ali. Homework is page number 210 of activity book and 211 of activity book. Okay, and in pupils book you will do question number 3, question 3 of page 212. This is your homework. Okay, this is the, मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ मैं इसको. This is your homework and we will discuss it again inshallah in the next class. In the next class we will do the ordering of mixed numbers. Okay boys, we will meet inshallah.